Uh, Hello, hello, hello. Am I audible? Is my voice audible? Okay, let's go. Let's start our day. Today, by the way, it's what does it call? Bank holiday, US bank holiday. So markets are like they will be a bit slow compared to other times. By the way, now our capital is back from $20 to $32. We have hit 60 pips TP yesterday with 0.02. This trade would have given us Walaikum Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So yesterday we took a trade on live stream. We closed the trade at 60 pips, but this trade went around 300 pips. It went around 300 pips. I'll just show you guys where was the entry yesterday. This was the entry. I closed my trade here. Then after this trade, oh, bhai saab, it went around 500 pips. Freaking 500 pips. But I closed this trade at 30 pips. That's it. You can see with 0.02 lot, I just booked $12. Bad luck the guys who missed yesterday's stream. आज बैंक हॉलीडे है, हाँ बैंक हॉलीडे तो है, सो मार्केट्स आर गोना बी अ बिट स्लो. अगर पेंडिंग ऑर्डर डाले, इधर पे मेरा बाई था, एग्जैक्ट पॉइंट देयर में बाई एंट्री, इधर पे मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया. अरे भाई, गुड ट्रेड. It was a 500 pips trade again. So now capital is at 32. So today what we have to do is, आज का lot size निकालता हूँ, रुको. भैया भैया, ये सब नहीं. Okay, $32 is starting capital. 0.04 will be the lot size, $4 will be the stop loss, फिर से 12 pips का TP रहेगा. Ending capital should be $44. So this is our next goal now. तो फोकस करते हैं. लेट्स फोकस. गोल्ड में सेलिंग लेवल के पास आ रहा है. बाइंग लेवल इज दिस लेवल, दिस इज द सेलिंग लेवल. सेलिंग लेवल में लेट्स सी इफ वी हैव एनी गुड एरिया हियर. ओके बॉस, ओके. But seriously, yesterday's trade, now it was seriously very much good. At that time, no one was there in the stream. I was sitting alone around 9:30 Indian Standard Time. I just took my entry here. कहाँ पर गया भाई? Oh. Yes, Amir, I took my entry and it went 500 pips. Uh, I closed at 60 pips. Correct, at 60 pips I closed the trade. Before that, you can see there was a losing streak. छोटे losses. You can see my losses are so small, right? $1-2 के break even trades. एक trade, we are at $32. Like the stream, guys. Like the stream.
And whoever is new, subscribe to the channel. We have to hit 1000 subscribers. अगर 1000 subscribers hit करते, this is the indicator which I have coded. I'll give you the access of this. This is a very much magical indicator. Whoever have not seen, you can go and see yesterday's stream, how well this indicator works. 1 minute time frame का ये है level, right? So this is the 1 minute time frame level in gold. 15 minute time frame. Okay. So now this is a perfect level. That's why I tell, starting से लेके end तक बैठो मेरे stream में. We don't know when we'll get a trade. I was sitting for around 2 hours. After 2 hours, I got a trade which was so huge, so freaking huge. So let's wait. Gold A level पर आने दो. I'll just take out my pencil. क्या हुआ भाई इंटरनेट? It's working. So the plan will be, let gold come to this level. इसको ये buying ये selling level पर आने दो. इधर पे liquidity grab, at least one candle should close above this level. Then when it will cross this level, we'll go for a sell side trade, aiming for this level. Okay, so इधर पे हमें कुछ 200 pips का TP मिल सकता है. You can aim for 200 pips trade. And Bitcoin. Bitcoin का भी, this is the selling level in Bitcoin. This is the next good level. Wait. And in Bitcoin, we have to plan a sell side trade. Come up, then a downside move. This will be the plan in Bitcoin. If we need a buying side trade, gold should fall, Bitcoin should fall till here. Real level से फिर एक upside movement आ सकता है. So we have to wait either for a buying level or a selling level in Bitcoin. Gold, we have to wait. Whoever will wait patiently in the stream, they'll get a good profitable trade. And this trade in which I made profit, it's on yesterday's live stream, you can see.
This is the live stream yesterday. Pura 2 hours we were just sitting quietly. Just see, okay. This here was the entry plan. Fine. At this point, my entry was planned. You can see even the time 9:20 Indian Standard Time. This is my XNES 0.2 से लिया था trade. TP पूरा place कर चुका था. You can see this was the same trade in which I closed. Okay. Pull back लिया and से ऊपर गया. So this was the trade. Mhm. And by the way, Imad is back, so he'll be joining the stream in next maybe sometime. He'll join us. This is a problem. People don't watch my stream regularly. They don't see all my trades, and in middle they come where when I make profits, they don't be there. People don't have patience to wait for a good profitable trade. Mhm. Is the drone ready, Rizwan? 100% completed.
Send me the video. अरे by rotate हो. Perfect. By the way, how is this new strategy which I have taught you?
Hello, hello. Is there anyone in the stream? You can see now it's 32. कल ही ट्रेड लिया था जिसमें $12 का प्रॉफिट किया था. So according to the table, $20 से $32 पहुंच गए. Today from $32 we have to take it to $44. So बड़ा है अकाउंट. And yesterday I had closed the trade at 60 pips from 0.02 lot, but the trade went around 500 pips in Bitcoin. Buy किया था इधर पे at this bottom. You can go and check in my yesterday's live stream around 9:20 p.m. इधर bottom पे buy किया था and I had closed it on 60 pips somewhere here. यहाँ से trade went around 500 pips. 500 पिप ऊपर गया था price. By the way, if you're new in the stream to the channel, you can subscribe to the channel, like the stream. हेलो हेलो हेलो. आवाज आ रही भाई? One second, you're not audible. Let me check the OBS settings. No. Hello. Yeah, tell something now. Hello. Yep, no, it's audible. Advanced property settings. No. Okay. Why it's not coming onto this? Connected to है ना अपने. Yes, it is connected. Earbuds is connected. तुम्हारा आवाज इसमें आ रहा है. किसमें बोलो? मॉनिटर का जो है earbuds में it was supposed to come in the earbuds. नहीं तो तुम्हारा आवाज जो है ये होता एको होता है. Monitor and output close. इसमें स्पीकर माइक्रोफोन रियल टेक. ओके, मोमेंट टू डू. एक सेकंड, एक नया मीटिंग में बनाता हूँ. तुम बना क्या लो। करना था? 1 सेकंड. Bitcoin where I had taken a separate entry here first. So I had taken my first entry here at this time. Then here, and again when it was crossing this level, I took my entry here exactly. Then went around 30 pips into my favor. I just wanted more 20 pips. So my target was still here. So I just the stop loss was hit here. Market didn't just touch my trailing stop loss here, as you can see
So this is a trade. Here my trailing stop loss got hit, and just exactly after my trailing stop loss got hit, Bitcoin crashed and with my TP of 53 pips, we booked around 3.17 USD, and now the balance is around $27. So this was the London trade, and just booked. क्या प्रॉब्लम है इसमें? This is connected, but the problem is, let's remove this. Remove. Add new device. Bluetooth. Perfect. Hello, hello, hello. कुछ बोलो, tell something. अरे आवाज अरे पूरी आवाज हो तो आवाज तो आ रही, बट इसमें क्यों आ रही? तुम्हारा इसमें क्यों नहीं आ रहा? इसमें बोलो। केबल इनपुट, डायरेक्ट केबल इनपुट है इसमें नहीं। नो प्रॉब्लम, इसमें वॉल्यूम थोड़ा सा रिड्यूस करा देता हूँ। एक सेकंड रुको, इसे चेक करता हूँ मैं कि कुछ ये तो नहीं हो रहा ना। एको। हम्म परफेक्ट। कुछ बोलो। वे आ रही क्या देखो आवाज मेरे सीधे से। थोड़ा बहुत सा एको है, बट और थोड़ा सा वॉल्यूम रिड्यूस कर लेता हूँ इसमें। अब बोलो। हेलो। परफेक्ट। गाइस वी आर बैक। ब्रो इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? तुम ना दिख रहा? तुम्हें मेरा स्ट्रीम ओपन कर गई है? हाँ हाँ। So in this mark this level in Bitcoin, this is the 15-minute time frame. Then in 1 minute time frame, we have marked this level.
This was the support which got broken. Resistance again. It has now it's acting like a resistance. So the plan will, if it will go above this level, closes one candle. Then if it reverses from here, we can go for a sell side trade. This is Bitcoin and this is gold. In Bitcoin, in gold also, this is the 15-minute level. Inside this, mark this 1 minute time frame level. This is for buying and this is for selling. Mm. So whoever is new to the channel, like the stream, subscribe to the channel. We have to hit 1000 subscribers. Next goal. Okay. इंडिकेटर्स का सेटिंग भेजो थोड़ा. Settings. 1 second. लैपटॉप में नहीं है अभी. स्ट्रीम में तो सेटिंग्स नहीं दिखाता, मैं तो इसे थोड़ा बंद करा देता हूँ. सेटिंग्स. इनपुट्स में जाको सिर्फ जो पिवट कलर है, पिवट कलर है ना. फोटो भेज डालो व्हाट्सएप में. हाँ हाँ, ऊपर का नीचे का दोनों सेम. ऊपर वाला वो जो डिफॉल्ट ब्लू है, दैट्स द सेम कलर. नीचे वाला सेट इट टू ऑरेंज. और दोनों का ओपेसिटी ऊपर और नीचे का दोनों सेम कर दियो. फर्स्ट वन का 50%, 50 और 51. सेकेंड वन का 10 और 11%. दैट्स इट. कलर कौन सा चूज है इसमें पिवट में वो. जो ऊपर वाला है दैट इज रैंडम ब्लू, जो डिफॉल्ट आता है. जो नीचे वाला है फ्रॉम येलो टू डू इट, शिफ्ट इट टू ऑरेंज. येलो उतना विजिबल नहीं है. हम्म.
तुम ना समझ तो आ गया नहीं what we are planning to do. Hmm. अभी स्क्रीन दिखाना शुरू करा था. Hello, Ishaq bro, hello. Bro, you just missed a 500 pips trade yesterday. Now you can see, now it's on $32. I booked the trade at 60 pips, but the trade went around 500 pips in yesterday's stream. You missed it. You can see yesterday's stream in the ending, somewhere around here. ये ट्रेड था. गोल्ड में भी एक ब्रेकआउट आने वाला है अभी. हम्म. गोल्ड में This वन was मिनट the में दे trade. मेरे को. हम्म. See, I have screen sharing. See, हाँ, 1 second. it's sustaining over there. It can give a breakout. Gold, right? हाँ. Mm-hmm. But the accuracy of this indicator is crazy, bro, Imad. Mm. 15 minutes per or 5. See, in whatever time frame, whenever it touches this level, right, once a reaction आने का है. Even here, in this blue zone, you can see it went for a buy side trade. Just touched this support zone and then it went for a buy side trade. Even here, this level was predefined. It came, it touched, and it, how many pips? It's around 80 pips up. People should watch our stream fully till the end Mm. so that they You can don't miss even any sell. trades. Selling is like bit risky from there. From this place. No, selling, no, the 5 minutes level are not good. In 15-minute time frame, the selling level is from here only. 4165, and the actual level which we are targeting is 4166.5.
Okay, you're on your actual balance now, 32.6. Hmm. When the indicator is also telling the same level. I'll wait for you to finish college and start full-time streaming currently in Los. My college is over, dude. I have maybe tomorrow and Saturday last day. Then from there I don't have any. From Monday I don't have any classes. Even now I'm doing full-time streaming only. You can see, join our evening streams. Yesterday the stream was around uh, 9:20. The trade was formed in Bitcoin. Thing is, you have to wait patiently till the actual level comes. Where did you do your loss, by the way? Gold. Hmm. Gold from morning only, it's not tradable, bro. Gold, Hmm? no. From morning there was weak buying, sudden drop, then again weak buying. It's like inside this zone only, inside this choppy zone. तो गोल्ड में Hmm. सुबह से कोई ट्रेड ही फॉर्म नहीं हुआ है. Stick to higher time frame. Don't go for lower time frames. Lower time frame में you see many setups which are very much weak, which will not give you proper TPs. Stick to higher level time frame, 15-minute time frame. Just do your entry and exits at 1 minute time frame. How's Rizwan engineering is going on? Class He studies. has made a drone which will check the temperature. Then what? Some क्या बोला था उन्हें? हाँ, air quality. Something something. Not he, his entire team. दिल्ली में पक्का जॉब लग रहा है रिजवान को, हाँ. एयर क्वालिटी पूरा चेक कर. Hopefully, you don't make losses. Bro, Iman, uh, ये जो indicator है नहीं, Hmm. we have to copy its code, and still more we have to refine it. Then again make another one by changing the name also. Okay.
Mm, 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 mhm. No, just see the levels, dude. Here also, when this level was formed, no, the level was something like this. Okay, you're seeing my screen, right? Yeah. So here, this level was formed. Okay, how to get this indicator? This is a personal indicator, though, which we have coded. It's still under testing. We have not yet launched it. So when we launch, you can get it. It's paid indicator. We'll not launch it for free because we have put lots and efforts and done lots of coding to make this indicator. Just see, whenever it just touches this level, a fall. Again, it comes to the same level, fall. Again, fall. Then a breakout. Now this has become a support level, and most probably, again, when it will come to this support, it's gonna go upside. Yesterday, I had taken my entry here at this pinpoint level. At Mm. this buying level, I took my entry. Uh, I closed my trade here around 60 pips. From here, trade went around 520 pips. Crazy move, bro. And it's not the first time. I had sent you the screenshots, right, when you were in Saudi. All the trades are Yeah. more than 100 pips, 200 pips. This solo music is there, right? He's from Pakistan. Which guy? Solo music. I His haven't name is seen. Hassan. He's from Pakistan. What even he does trading or something. Yeah, in XNES. Feel gold will give us good move today. We can go for a sell side trade from here. Gold has already given the move. The next TP, which if we go for a sell side trade from this level, right, 166.4, then the next TP will be around 125 pips. This 15 minutes blue level. No, not this level. This become in this indicator, right? You can see this level, right, around 1 to 5. This indicator has stopped here only, right, around 545. That Mm. means there is no significance of this level anymore. Below this, you can see that this indicator below this level, around 144, this level is extending, right. It means the significance is still there. Whichever levels you can see that it has stopped now, don't follow that levels because that levels are dead now. You practice this indicator, you'll just understand, and it's really very much powerful indicator. And from Monday, what I thought is, anyway, we have just till Jan end, right? Yeah. So we'll stream more around from 11 a.m. to 2:30 or 3. Then again from 6:30 to 9:15 like that.
How much up you are in that account? 45, 65, I guess. 45. 45. Hmm. Like the stream, guys. Like the stream. Bro, it has started. Officially, it has started. From 20, we have come to 32. It has already started. It's officially started. You can see it has started. We are making profits also. Here there was few lost trades. 1, 2, 3, 4. Again, we have made profit. We have come to $32. It has officially started. This is all. Now next TP. No, it's $32, right? So according to this chart, now we are at day 2. Starting is 32. Now we have to end at $44. Again 0.04 lot, $4 of stop loss, $12 TP will be at $44. It has started officially. We're up $32. Next TP will be 44. You just missed yesterday's trade. It was seriously very much good trade. And you know bro, Imad, वो trade में ना by in MT5 while I was entering sometimes the candle moves quickly और हमारा late entry हो जाता like entry point से थोड़ा ऊपर entry हो जाता है right. वो वैसा ही ट्रेड था. My entry was maybe 3 or 4 pips above from my actual entry level. Entry करने टाइम ही कैंडल ऊपर भाग गया था. Then also Hmm. the trade did not come even 1 cent in negative. From that point it was just going upside. It did not come into a drawdown. And if you just clearly observe these levels now, like see this level around 12:30 in gold in 15-minute time frame. This was the orange level, right? Then it just broke. Then this blue level formed. Market just touched this blue level. Then upside movement. Same way, it broke this blue level. Orange level was formed. It touched this orange level. Again a fall. At this point also around 2:30 also, orange level was formed. It touched this orange level. Again a fall. This is really working very much nicely. And you know, in if we go to the daily time frame, right? Exact at the bottom level, go to the daily time frame. See the indicator level there. 91, Hmm. 81,000. Exact at the bottom level. From there only it started to move again. And on stream also had given the same level. From there, how many pips up? Around कितने भैया? Around 1000 pips up. The trade. And if you see selling also, uh, see 11th November 2025 in daily time frame. This was a blue level which was broken. After broken, it turned into a orange level. It just retested it, and from there it just crashed. Hmm. How many pips? Around 2700 pips. Seriously, very good indicator. In this 15 minutes is the best time to trade intraday. And frequency is also very much high. In a day, we get easily 2 to 3 trades. Bitcoin is ranging. Hmm.
I'm seeing gold over that old setup is being formed. Yeah. Till what time is alive today? Mostly it will be around 9, 9:30. 9:30 is maximum. Daily. 9:30 will be maximum. After 9:30 will not be streaming. But it's my problem, bro, Imad. It has not crossed 20 pips only. It's still on 19 pips. The breakout. But it has to come to this level. इसमें in this what basically this indicator does it, जो भी जो algorithm के जो levels रहते हैं ना, market is, I have studied this very much deeply. It's coded, okay? Everything is predefined. एक algorithm में move होता है so price. So this level, what does this indicator does it? जो algorithm जो swings mark करता है ना, it just marks that swings and gives us. तो ये algorithm के level से, if you see ये वाला level देखो जो 150 के पास है, Hmm. the same level how many times it has tested support, the same level became resistance, then a support, then again a resistance, then again a support, again a resistance, again a support. Same level which market is playing up and down, up and down, up and down. That's it. 20 pips तक above close होता है तो Don't miss the stream, guys. Join the stream regularly. See the full stream because we don't know when we'll be getting the trade. 2 hours बैठे रहो, we don't get any trade. We just wait for the last 10 minutes. We get a good trade. We place our trade, then we just go. क्या bro, सही ना? Hmm. इंडिकेटर प्रोसेस करना थोड़ा टाइम लगता है. से कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? This is cable input. Advanced settings. Everything is proper. Don't know what is the problem. ये जो है तुम्हारा आवाज ब्लूटूथ ईयरबड्स में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली स्पीकर में आ रहा है, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा लो करना पड़ रहा, सो दैट इट डज नॉट एको अगेन. क्या प्रॉब्लम हो रहा है? I'll do ChatGPT.
due to no volatility and so sideways. Yeah, but when the market starts moving, now it does not see any holiday and all. गोल्ड 1 मिनट गोल्ड देखो एक बार हाँ हाँ, गोल्ड देख रहा हूँ। गोल्ड में तो बाइंग उठाना है इसके पास से ही 146। ओ भाई, बट दिस सिनेरियो व्हिच इज बीइंग फॉर्म ना ब्रो, ये बहुत ज्यादा रेयर हो गया है। बैक टेस्टेड इट सो मच, दिस इज नॉट हैपनिंग मच, एंड व्हेनेवर ये जो हमारा पुराना सेटअप फॉर्म हो रहा है ना, वी आर गेटिंग वेरी मच लेस पिप्स। 55 pips पेशेंस रखो, either a buy side trade from here or a sell side trade from here. In the middle, market is just consolidating here. This is just a consolidation here. Big move will come either from this level or either from this level. In the middle, whatever happens, everything is just consolidation. Tomorrow, Friday is extra risky to trade at manipulative. Mm, I don't think so. In intraday trades, the strategy which we follow, there are less risk here because we trade on very much high probability levels. So manipulation at this moment at these levels are less. Manipulation happens at less probable setups. And Friday there will be good volatility because yes, today is the bank holiday, right? Tomorrow maybe in the London session markets will be a bit slow, but NY session everything will be normal, back to normal.
These are even yeah, Asia session moves a lot. Yes, and you know when does it move? You see midnight when the gap up or gap down will be opened, right? If you go to the 1 minute time frame in gold, I'll just show you. They're buying gap up, gap down, open. Why? Thursday, right? Here, this happens each and every daily. It happens. Market open a gap up here. This is the gap here, right? Market comes always. It comes, fills this gap, then a reversal. But I'm not able to capture this reversal. This always happen. Whenever there is a gap here, right? It always comes to fill this, then only it goes. Daily it happens. Yeah, problem, Mike. So yeah, it gets filled. Bro, tell me one thing. Do you actually have a proper trading system, a proper trading strategy? Because you know why most of the people are in losses? Because they don't have any proper trading system and they don't have proper rules. They don't know when to enter, when to exit. That's where things mess up. Like, for example, I know very much properly my strategy. Okay, here if it comes, then there is a reversal from here. That's the problem. You'll always be in loss. Do whatever you want. You'll always be in a loss if you don't have a proper strategy. If you don't know a proper set of rules, when you have to trade, when you have to not trade, you just trade randomly. Like here, you don't have a strategy, right? This is the place where you lose money. Like how now I know my setup, my strategy. I very well know that I'll not plan any trade until and unless gold comes to this level or this level. Till then, I'll just quietly sit. But what normally the people who don't have any setup do is they just shift to the 1 minute time frame. Okay, uh, load this. Okay, they shift to the 1 minute time frame. This is fully consolidation here, right? Fully consolidation here. People draw some random levels here and try to trade inside this. Here they won't get big moves, 20-30 pips move they get, and mostly the stop loss get triggered at this point only. Because there is no direction only, market is just sideways. Obviously you will lose money. So you should always have a proper setup. Should have always have a proper plan, then only you can trade. Like now my plan is fully clear, right? There's a buying karna hai, there's a selling karna hai. I have a clear vision. In this middle, let anything happen, I don't care because this is just consolidation where the retail traders who don't have any strategy, no setup, no rules, these people are losing money here. Market is just removing them so that it can go to the actual levels and start giving moves from that levels. So you have to always stick to the 15-minute time frame and have a proper setup here. You and I'll tell you one more pro tip, okay? Less is more. In trading, less is more. In the challenge trade, do you take partial or let it run to a TP or SL? TP or SL, bro. TP or SL. At one point of time, for example, I took my entry at 15 minute time frame, right? These are my 1 minute time frame levels. Example, I have taken a sell side trade from here, okay? This is my entry point.
market has broken all these levels and it has come till here. Okay, now the support which is formed here, now they act like a resistance. Like, so if my entry is here, 1 second. Okay, so imagine now my entry is here. Okay, at this point is my entry. My original stop loss will be something here. When I know that the market has uh, come till here, I just trail my stop loss to break even, because now here there is full space for the market to move. I know that if it crosses this level, it's 100% gonna hit my stop loss. So I always give some breathing space to the trade, and then I let my full quantity run till my TP. And this challenge is, we are doing normal trading only, just we are taking more and more lot size, aggressive scaling. That's it. आप लोग सही ना? हाँ. Booking partials we used to do before. Like before, what we used to do is, whenever we hit 1:1, like for example, our stop loss is of 10 pips, then if the TP goes like if the trade goes 10 pips in our favor, then we used to book 50% of our quantity, so that if it reverses and if it hits our stop loss also, we don't get any loss. But because of which, it was forcing us to capture more pips, and we used to cut our 50% quantity so soon that the trade used to not grow only. So that's why we just stopped booking partials, either TP or SL. As not even SL, we go for break even, because now we have a proper strategy which proper levels which tells us where we have to cut our trades at break even, and like where should we keep our trailing stop loss and all. It's not like we place it randomly anywhere. We keep it at a proper level. For example, like here on you can see, here if I do my break even, right, this level is so strong, just coming touching this level and falling again and again and again. Let's remove this tool and see, it's not crossing this level only, so my stop loss is at break even. And you should not be back of this challenge is what we are just flipping the amount, right? The main goal is to take the right proper trades by following our setup. If we keep running back of money and profits, if you don't target focus on getting good trades, anyways you are gonna lose money, anyways it's gonna go into loss. फायदा क्या है challenge का? Focus on the right process, focus on capturing good trades. What in just challenge we're just flipping money, increasing our lot size, again profit, increasing our lot size. This is what we are doing. But one thing is consistent, that is capturing good trades. So have a proper system, proper strategy. That's when you grow. Or else you'll just lose every time. अरे मियाँ मैं थक गया, अब तुम्हें ही बोलो ब्रो, तुम्हें ही रिप्लाई करो मैसेजेस के, जो भी पूछती हैं बंदे लोग। प्रोसेस करने टाइम लग रहा है कि क्या प्रोसेस करना है? 15 दिन के बाद ना. बिग ब्रेक। और जब वापस आए तब स्ट्रैटेजी ही बदल गई। नो, द स्ट्रैटेजी सेम, वी आर स्टिल ट्रेडिंग ऑन लिक्विडिटी ओनली, बट जस्ट दैट आवर मार्किंग, लेवल मार्किंग हैज बीन चेंज्ड, दैट्स इट। लेवल मार्किंग का तरीका बदल गया। और जो भी ब्रो सीरियसली, जो भी लिक्विडिटी ग्राफ्स बन रही ना एट दिस लेवल्स, इधर पे अगर लिक्विडिटी ग्राफ, क्या सही ट्रेड्स बन रही ब्रो, सच में। प्रॉपर सप्लाई जोन एंड अ प्रॉपर लिक्विडिटी ग्राफ, क्या ट्रेड्स बन रही ब्रो। हमारे जो देन आई बैक टेस्टेड इट विद दिस इंडिकेटर, जितने भी हमारे ट्रेड्स पुराने फेल हुए ना, वो एक्चुअल लेवल थे नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक रेसिस्टेंस था ना, इधर से तो मूव आगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें स्टॉप लॉस खा लेता, क्योंकि हमें जिधर एंट्री करते हैं ना उसके जस्ट बिलो इधर पे एक सपोर्ट जोन रहता है, और एक्चुअल रेसिस्टेंस इधर पे रहता है।
तो हमें प्रॉपर लेवल्स को वेट ही नहीं करते हैं, इसके वजह से हमारा मोस्टली स्टॉप लॉस ज़्यादा था। और हम ना हम्म। इतना ज़्यादा उसमें स्ट्रेस रहता था, राइट, 2 कैंडल्स क्लोज होना, इसमें ये एंट्री, सेकेंड एंट्री, 20 पिप्स, ये वो। इन दिस, जब तुम्हें एक्चुअल जगह में एंट्री लेती ना, मैटर नहीं करता वो 25 पिप्स हो या 20 पिप्स हो वो ब्रेकआउट, या 2 कैंडल क्लोज हो या 1 कैंडल क्लोज हो, बिकॉज यहाँ से सेलिंग आनी तो 100% ही है। तो जस्ट इफ वन कैंडल ऑल्सो क्लोजेस, राइट, इसमें भी लिक्विडिटी आ जाती है। और ये बाकी के जो सेलर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स इतना प्राइस को पुश कर डालते हैं कि इतना लिक्विडिटी भी बस है। ये थोड़ा प्रैक्टिस करो, तुम्हें ये तुम्हें चार्ट्स देखो थोड़ा देर। इवन मुझे भी ना थोड़ा समझने में टाइम लग गया ये, बट वंस मैंने अंडरस्टूड दिस ना, क्या सिंपल होगा ब्रो ट्रेडिंग, सीरियसली पहले से भी ज़्यादा सिंपल है। एंड हाई एक्यूरेसी, यू हैव सीन, तुमने में कितने दिन में ब्रो, मे बी 4-5 डेज में तुम ना मैं 10-15 ट्रेड्स का स्क्रीनशॉट भेज डाले इन विच द टीपी आर मोर देन 100-150 पिप्स। कंसोलिडेशन मैन, जस्ट कंसोलिडेशन। व्हाट्स हैपनिंग इन बिटकॉइन? Even in Bitcoin, the next buying level is here only, and the next selling level is here. और ब्रो, जब मैं ये स्ट्रैटेजी मैं चेंज कर लेता ना, मतलब चेंज तो नहीं करेंगे, हम बेसिकली अभी भी ट्रेड कर रही है सप्लाई एंड डिमांड जोन, एंड वी आर ट्रेडिंग द सेम लिक्विडिटी ग्रैबेज। सिर्फ वो 2 कैंडल क्लोजिंग 20 पिप्स के ऊपर गया तो सेकेंड एंट्री, वो सब चीज़ हमें थोड़ा फिल्टर आउट कर दे रही है। सो तब मैं क्या रियलाइज करा, ये ऑलवेज कैनॉट स्टिक टू वन थिंग फॉर ए होल लाइफ, तुम्हें मार्केट के साथ इवॉल्व होना पड़ता अगर गेम में बने रहना है। मिल जाएगा आगे तुम्हें। छोटे छोटे चीज है ना, उसमें बस चेंजेस करते रहना। एंड MT5 में बेस्ट थिंग व्हाट आई लव इज, अभी यहाँ एक्सनेस वेब टर्मिनल है मेरा, ठीक है, जिसमें एंट्री पॉइंट का तो जब भी क्रॉस होता रहता नहीं, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं एग्जैक्ट लेवल पर एंट्री करूँ, क्योंकि उधर लेवल्स ड्रॉ हो गई ना। बट MT5 में हमारे कुछ लेवल्स नहीं है ना, खाली बाई सेल दबाना, इधर पे क्रॉस हुआ तो उसमें लेवल्स नहीं दिखते, थोड़ा एक दो पिप ऊपर हुआ तो भी माइंड को डिस्टर्ब नहीं होता और एंट्री आराम से हो जाता है। वो एग्जैक्ट लेवल्स के लिए वेट नहीं करना पड़ता। और जब भी स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट कर को 1 मिनट के लिए ओपन करता हूँ स्ट्रीम, उसके बाद क्लोज कर डालता हूँ, फिर न्यू स्ट्रीम ओपन करता हूँ रोज। क्यों?
उसमें बस एक ब्रीफिंग देखो कि ये हुआ स्ट्रीम में, 1 मिनट के अंदर देखो, उसे क्लोज कर डालता हूँ। वो वाला ट्रिक जिससे वायरल जाते हैं, रोज करता हूँ वो। गोल्ड में ये लेवल देखो, जो 52 के पास जो लेवल है, उसमें वो स्टॉप हो गया, वो एक्सटेंड ही नहीं हो रहा है। बट उसके जो नीचे जो लेवल है 46 के पास से, वो जो जैसे जैसे कैंडल फॉर्म हो रहा है, द लेवल इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग। ब्रो ईमान, मैं तुम्हें एक रील सेंड कर रहा हूँ, ये देखो थोड़ा। रील बोल रहा हूँ, एक शॉर्ट सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप में। हम्म, सेंड कर तुम देखो। इसके और हमारे सिर्फ 98% सिमिलर है। 2% ही जरा ऊपर नीचे है, दैट्स इट। भी है, देख सकते हो ये वाले इंडिकेटर की लेवल है। अगला रिजेक्शन आएगा, रोजी बनती हुई दिख रही है मुझे, क्या कमाल के ट्रेड लेते हैं। Is there any echo in the voice, or is it fully clear? $4,000 ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। हम्म एंड वो बंदा हमें कैसा, हमें अपना स्ट्रैटेजी इसके साथ ऐड कर को, हमें सपोर्ट, वो हमारे लिक्विडिटी के वास्ते वेट करती ना, उन्हें टच होने पर ही उठा ले रहा है, एंड इट्स जस्ट मेकिंग क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी। मैं सोच के देन ये मिल गया मुझे। बीटीसी so slow market, man.
आज वॉल्यूम ही नहीं है ब्रो, मार्केट में पूरा डेड डेड है। किस जगह रैंच कर रहा पूरा। मार्केट इज डेड बट ऑल्सो पीपल यही कंसोलिडेशन में ट्रेड माँ ओवर ट्रेडिंग कर करके पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देती। बट जो लेवल से मूव्स बहुत तगड़े तगड़े आ रहे हैं भाई। यहाँ से 1000 पिप्स, 100 पिप्स, यहाँ से 200 पिप्स, अगेन फिर ये तो फॉल ये पे। वाला सपोर्ट दिखा रहा क्या देखो, 4149 वाला। कौन सा? 4149 गोल्ड का। 4149। ये सपोर्ट। ये सपोर्ट भी वैलिड है। 5 मिनट्स वाला लेवल है। बट मैं वही चीज ऑब्जर्व करें ब्रो, ये लेवल से रिएक्शन आता बट उतना नहीं आता लेवल से रिएक्शन। बहुत कम रिएक्शंस आते हैं। अब जैसे ये सपोर्ट इधर पे मार्क करे ना, तो मैं देखो मोस्ट प्रोबेबली ये सपोर्ट को जो है इट विल जस्ट गिव अ ब्रेक डाउन, इट विल टेक सपोर्ट फ्रॉम हियर ओनली, देन इट विल गो अप 4145 के पास से। इसमें पास्ट डेटा देखो, इन द पास्ट डेटा सेम लेवल पर मार्केट ने बहुत ज्यादा बार रिएक्ट कर लिया है। यू कैन सी कितना बार रिएक्ट कर लिया है मार्केट ऑन द सेम लेवल पर, 49 के पास वाले। रेसिस्टेंस से सपोर्ट, देन अगेन सपोर्ट टू रेसिस्टेंस, देन अगेन रेसिस्टेंस से सपोर्ट, फिर से रेसिस्टेंस, फिर से सपोर्ट और फिर से रेसिस्टेंस बन के यहाँ से एक बाई से ट्रेंड मिलने वाला है वैसा। मैं वो आई वाज सीइंग दैट आईसीटी सीरीज, ओके। आईसीटी, आईसीटी मालूम ना तुम ना? तो इन दैट आई लर्न कि एवरीथिंग ना इज कोडेड इन मार्केट। एक जो एल्गोरिदम रहता ना मार्केट मोस्टली वर्क्स ऑन दैट एल्गोरिदम ओनली, एंड दैट वो एल्गोरिदम जो है नॉर्मल पीपल कैन नॉट understand that algorithm, because of which they get trapped in these kind of levels। और ऐसे जो लेवल्स है ना मार्केट मेकर्स जानबूझ कर बनाती हैं सो दैट पीपल बाय और सेल एट दैट लेवल और उधर पे उन्हें ट्रैप हो। अब जैसा हमने ये लेवल इजीली दिख गया राइट, ये 49 के पास वाला, पूरे वर्ल्ड में पूरे आदमियों को ये ना सपोर्ट दिख रहा है। अब सब हाँ। लोग जो है यही सपोर्ट पर रिएक्ट करना शुरू कर डालते हैं, कोई बाई करता, कोई सेल करता, कोई लिक्विडिटी ग्रैब करता, बिकॉज लिक्विडिटी ग्रैब हैज बिकम कॉमन राइट नाउ। तो सब लोग जो है यही लेवल पर सब लोग करते रहते हैं, दिस इज लाइक अ हाईलाइट लेवल। बट मार्केट मेकर्स इधर ही ट्रैप कर को ये जो नीचे जो ये लेवल दिख रहा है ना जो हमारा इंडिकेटर वाला है अराउंड 45, ये जा तो मेन लेवल है जो आदमी के नजर में नहीं आते। सेम फॉर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के पास जो 60 के पास जो रेसिस्टेंस है
अदमिया का पूरा हाईलाइट इस लेवल पर है, मार्केट फुल मैनिपुलेशन करता, एक अपसाइड मूवमेंट देता, इट विल गो अराउंड 64, 64 से जो है इट विल गिव एक्चुअल लिक्विडिटी ग्रैब मूव, देन इट विल फॉल. So I was studying ICT deeply. Then when I saw this levels, right, तब मैं समझा ओके दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. तुम्हें मेरा स्क्रीन देखो, ऑब्जर्व दिस लेवल. ओके, तुम्हें किस में देख रहे हो, मेरा स्क्रीन में? अच्छा, ये आधा आधा लैपटॉप कर लो क्या? में स्प्लिट कर लिया मैंने। हाँ ओके. सो ये लेवल देखो, ठीक है, ये लेवल देखो. फर्स्ट एक ये लेवल बहुत टाइम पीछे से आ रहा है. ओके, अरे ओके, सो दिस इज द लेवल, राइट. इसे डिलीट कर देता हूँ. फर्स्ट दिस वाज अ सपोर्ट, सपोर्ट, सेम लेवल अगेन बिकम अ रेसिस्टेंस, वो सेम लेवल ब्रेक होगा अगेन अ सपोर्ट, 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 सपोर्ट. ओके, सेम लेवल है. इसके बाद देखो, सेम लेवल गॉट ब्रोकन, अ रेसिस्टेंस, डाउन साइड मूव, अगेन ब्रोक, सपोर्ट, अपसाइड मूव. फिर से इसे ब्रेक किया द सेम लेवल, फिर से सेम लेवल से ही रिजेक्शन लेकर एक इधर पे रेड कैंडल डाउन साइड मूव, फिर से ब्रेक किया सेम लेवल अगेन अपसाइड मूवमेंट, देन अगेन ब्रोक द सेम लेवल डाउन साइड मूवमेंट. तो मार्केट एक ही चेक लेवल को ही फॉलो करते जाता है, ठीक है, वही लेवल पर ब्रेक करता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, उतना ही होता है इस मार्केट में. एंड नॉर्मल पीपल जो है इसे देख भी नहीं पाते. इधर पर देखो, सेम वही सेम लेवल, इट गॉट ब्रोक, सपोर्ट, सपोर्ट, अगेन इट गॉट ब्रोकन, बिकेम अ रेसिस्टेंस, डंप, अगेन इट गॉट ब्रोक, सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट लिया, अपसाइड मूवमेंट. यस, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट. बट दिस हैपेंस फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली. ये पूरा जो मार्केट है ना, इट्स लाइक कोडेड वे, फुल एल्गोरिदम में चलता है. बिग प्लेयर्स ना इसे, दे मूव इट इन एल्गोरिथमिक वे. जो छोटे बंदे लोग हैं ना, वो जो है इसे ना छोटे छोटे स्कैल्प्स के वास्ते दे हैव मेड दिस लिक्विडिटी ग्रैब, दे हैव मेड दिस, जो भी स्ट्रेटजीज रहती है ना, जो नॉर्मल रिटेलर्स हैं उसे कोड को थोड़ा बहुत क्रैक करके दे हैव नेम दैट स्ट्रेटजीज लाइक लिक्विडिटी ग्रैब और मार्केट स्ट्रक्चर जो भी है. मार्केट फॉलोज वन लेवल ओनली. ये लेवल कितना टेस्ट हुआ है, अब ये लेवल जो इनवैलिड हो गया. दिस आर द वैलिड लेवल्स नो. नाउ एक काम करो, नाउ जस्ट हाइड दिस इंडिकेटर. अब चार्ट को देखो, तुम ना कितने सारे लेवल्स यहाँ पर दिखते हैं नहीं. तुम ना सिर्फ जो स्विंग्स है ना, बस ये स्विंग्स दिखती हैं तुम ना. बट जब तुम्हें ये वापस से ला देती हैं, तुम ना देखो और ये लेवल कहाँ से आएगा, और मार्केट इधर पर रिएक्ट भी करता है. दिस लेवल, और यू कैन सी दिस लेवल, ये लेवल सब जो तुम ना दिखते हैं नहीं, ऑल दिस काइंड्स ऑफ लेवल. बट मार्केट जो है वही लेवल्स पर रिएक्ट करते जाता है. वो एग्जाम्पल के जैसा वो चेंज ऑफ कैरेक्टर का ए प्लस लेवल नहीं है जो उन्हें निकालता है, इसके नीचे ब्रेक डाउन होगा तो फिर इन्हें इधर पे एक लेवल मार्क कर देता है. ये लेवल इधर पे दिखता नहीं क्योंकि दिस इज द रेसिस्टेंस, दिस इज द सपोर्ट, राइट, जहाँ से रिवर्स होता है. पीपल सिर्फ ये दो लेवल्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम इन्हें जो प्रीवियस लेवल है ना, इधर से ही रीटच करके नीचे गिर जाता है. समझ रही नहीं तुम्हें कैसा मार्केट मूव होता है? तो ये सब होता है. तो मैं वही पूरा आईसीटी, एसएमसी, ये वो पूरा बहुत कुछ देखो, देन आई अंडरस्टूड हाउ एक्चुअल मार्केट मूव. तो पास्ट 15 डेट्स में ये कर लेता मैं, और एक्चुअल में वो करता है. पूरा कोडेड है, पूरा एल्गोरिदम बेस्ड है. वो एल्गोरिदम जो है, जो बिग प्लेयर्स ही मार्केट अकॉर्डिंग टू दैट ओनली दे स्टार्ट मूविंग दिस. और मूव करने के चक्कर में बीच में वो लिक्विडिटी ग्रैब ऑल दिस वो पूरा बना को, और लिक्विडिटीज पूरा लेको, उन्होंने ये करते थे मार्केट को एक्चुअल प्राइस में पुश करने का ट्राई. लाइक फॉर एग्जांपल,
इधर से एक लिक्विडिटी ग्राफ बनाती हूँ, एक्चुअल प्राइस को इधर तक लेकर जाने, सो दैट द रियल मूव कैन कम फ्रॉम हियर। और इधर पे एक लिक्विडिटी ग्राफ बनाते हैं ताकि उनको थोड़ा बहुत फ्यूल मिले टू कम टू द एक्चुअल लेवल, फिर इधर से एक अपसाइड मूव डाल दें। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड जितना मैं नोटिस किया ना, गोल्ड और बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली वर्क करता है दिस इंडिकेटर, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। 3 मिनट। 5 मिनट पर बहुत ज़्यादा नॉइस आया था, बहुत सारे लेवल दिखती, छोटे छोटे अब देखो 5 मिनट्स पर कितने सारे लेवल्स पॉप हो गए, बट ये सब जो है ना प्रॉपर मूव्स नहीं थे। जो 15 मिनट लेवल्स पर जो आती ना मार्केट, उधर से एक्चुअल मूव आता है, और क्या क्रेजी मूव्स आते हैं। जस्ट 15 मिनट्स का लेवल के ऊपर हमें हमारा 1 मिनट का लेवल प्लॉट करके एंट्री लेते होना, तो देखो व्हाट, देखो टू सिनेरियोज रहती, इधर पे टैप होता है, रिजेक्शन दिखता है, डायरेक्ट एंट्री कर लेती विद स्टॉप लॉस अबाउट दिस लेवल, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, स्टॉप लॉस हमारा बड़ा लगता है, राइट। अब बिटकॉइन है करके हमने 26 पिप्स दिख रहा, अगर तुम्हें गोल्ड में लिए स्टॉप लॉस 50 पिप्स 60 पिप्स दिखाता। वही अगर हमें ये सेम हमारा स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन कर लिया हमें, तो हमने एक्चुअल एंट्री पॉइंट मालूम हो जाता है, राइट। हमारा स्ट्रैटेजी, अब जैसा हमें इसमें 1 मिनट का लेवल ड्रॉ कर लिया हमारा स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, हमें, मैं कहाँ गया, हाँ, दिस इज अ लेवल, राइट। और ये लेवल भी कितना टेक्निकल है ब्रो, सपोर्ट था, देन बिकम अ रेजिस्टेंस, देन अगेन आफ्टर दैट बिकम अ सपोर्ट, देन अगेन अ रेजिस्टेंस, तो ये एक्चुअल एक रेजिस्टेंस ही है ये। और इधर पे मार्केट रिएक्ट करता है, तो इधर पे जब ना एक एक्चुअल एंट्री पॉइंट हमने मालूम होगा नहीं, तो हमें इधर से एंट्री करते हैं फॉर अ सेल साइड, देन 10 पिप स्टॉप लॉस अबाउट दिस, देन टीपी जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम का जो नेक्स्ट ब्लू जोन है सपोर्ट जोन, वहां तक लगा देते। सो एक प्रॉपर कंफर्मेशन फिफ्टी एंट्री से पिप्स मिलना है। इससे ब्लाइंडली भी लेवल्स में ट्रेड नहीं कर सकते, वी हैव टू पीसफुली वेट फॉर द मार्केट टू कम टू आवर लेवल्स, देन आवर सेटअप टू बी फॉर्म इनसाइड दिस लेवल्स। इसमें डबल कंफर्मेशन आया था, एक तो हमारा सेटअप बन गया, लिक्विडिटी इज देयर इन द मार्केट above this heavy supply zone or demand zone, from where there is high probability that market is gonna go in our direction। तो मैं समझ रही नहीं ये न्यू स्ट्रेटेजी हमारा, हम्म the old one in which we used to wait for the flashy candle, then go for second entry, more than 20 pips go for second entry, strong breakout go for second entry, all that is working but very much less, and the TPs you only can see कितना ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, जहाँ before we are aiming for 100 pips 50 pips, now we are aiming for 35 pips, so very much important to trade on the actual levels। इसमें सेटिंग्स प्रॉपर नहीं हो कि मेरा इंडिकेटर में कल क्लास में कर लेंगे। ब्रो ये सेटिंग्स सब सेम ही है ब्रो, तुम एक काम करो, सेटिंग्स में जो इंडिकेटर के नीचे डिफॉल्ट जैसा, नीचे डिफॉल्ट करके ऑप्शन दिखा था, गो एंड रीसेट डिफॉल्ट सेटिंग्स करो,
ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स करने के बाद कर दे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स तुम्हें। हम्म। अब लाइट ब्लू और लाइट येलो दिखा रहा है ना। अब जस्ट उसमें कुछ भी मत करो, तुम्हें पिवट कलर्स में जाओ तुम्हें। ऊपर वाला जो ब्लू है वो ब्लू सेलेक्ट करो, उसमें बस जो फर्स्ट बॉक्स है उसे 51% करो, सेकेंड बॉक्स को 11% कर दियो। कलर वही है। हाँ, जो ब्लू है नहीं वही ब्लू रहने दो, बिकॉज हमारा चार्ट का जो ये है ना बैकग्राउंड, इसके हिसाब से वही सूट कर रहा है। उसका 51% ना। हाँ, फर्स्ट बॉक्स में 51%, उसके जो बाजू वाला है उसे 11% में करो। और जो नीचे वाला है जो जिसमें येलो है उसे तुम्हें ऑरेंज कर दियो, वही रो में से डार्क कलर वाला ऑरेंज करके उसे भी फर्स्ट वाले को तुम्हें 51, सेकेंड वाले को भी ऑरेंज करके येलो से उसमें भी 51 कर दियो, ये 11 कर दियो। इसे भी ऑरेंज कर देना क्या? हम्म। एक बार तो हमारा बिटकॉइन का चार्ट देखो, इंडिकेटर डालते हैं। 1 मिनट में दिखा, 1 मिनट में दिखा एक बार। हेलो हेलो हेलो, हाँ ब्रो। वो मेरा डैड कॉल कर दिया था। क्या बोल रहे थे तुम्हें? एक बार बिटकॉइन का चार्ट देखो 1 मिनट में। तुम्हारा आवाज बिटकॉइन का चार्ट, बिटकॉइन का 1 मिनट में चार्ट दिखाओ। बिटकॉइन का चार्ट मेरा ये है ना। मेरे को नहीं दिखा रहा स्ट्रीम में भी। 1 मिनट में दिखो। उसमें बस कलर चेंजिंग करो और कुछ मत करो उसमें। सेम आया। हाँ। आ, मैं तुम्हें एक लिंक भेजता हूँ। ठीक है, उसका चार्ट और हमारा चार्ट दोनों कंपेयर करके देखो। सिर्फ हम दोनों के चार्ट्स कंपेयर करके देखो। गोल्ड 15 मिनट, राइट? यस।
Same levels. Exactly same bro. 19-20 का फर्क बस. ब्रो गोल्ड का 15 मिनट्स का चार्ट देखो एक बार तुम्हारा. दिख रहा था पे. दिख रहा दिख रहा. थोड़ा रेसिस्टेंस का कलर डार्क हो गया है. ब्रो 51 रखो और 11 रखो ब्रो. नहीं तो 50 रखो या फिर और 10 रखो. गोल्ड आ रहा है लेवल पर. और एक 50 पिप्स आना है तब एक सेल से ट्रेड प्लान कर सकते हैं. फॉर द सेम थिंग ब्रो $100 एक साल के वास्ते. $100. फॉर 1 year ऑफ एक्सेस.
ये पूरा कंसोलिडेशन में फंस गए है ब्रो। ट्रेड ये गोल्ड बिटकॉइन सब भी डेड हो गए। क्या कर दें, ट्रेड कर दें कंसोलिडेशन में, या फिर जब सब यूएस बैंक ओपन होया तब फिर ट्रेड करते हैं जब वॉल्यूम रहता। रिलीज कर दो, मैं आज तो नहीं। आज आज बहुत ज़्यादा डेड है मार्केट। ये डेड मार्केट में बैठ गए तो बहुत कम चांसेस रहते हैं ब्रो, जब पैसे वॉल्यूम नहीं रहता मार्केट में कि ट्रेड बड़ा मूव दे हमारे डायरेक्शन में। बेटर चलो तो फिर स्ट्रीम एंड कर देंगे। कल जब मार्केट ओपन हो जाता है, ये अपने क्या बोल रहे थे, यूएस बैंक से ओपन रहते हैं तो वॉल्यूम में तब ट्रेड करेंगे। नहीं तो एंड कर देता कितना हूँ। होगा स्ट्रीम स्ट्रीम स्टार्ट हो तो?